Students, we are on the next topic. Previously, we have discussed we can say, whole poem with reference to the paraphrasing of the stanza and explanation of stanza. Now, we have to look for the figure of speeches used in this poem. The first figure of speech is metaphor. In the previous lecture of daffodils, we have defined what metaphor is. Metaphor किसी चीज के direct comparison को कहा जाता है जब हम किसी दो चीजों को आपस में directly compare करते हैं. So, for example, he is lion. मैंने कह दिया he is lion. तो I am comparing a person with animal lion on the basis of their single common attribute. हम किसी को लाइन क्यों कहते हैं? जब वो बहादुर होता है, जब वो बहुत ज़्यादा वी कैन से उसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी का एलिमेंट जो है ना वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम किसी को लाइन कहते हैं कि यार तुम तो शेर हो. सो ये डायरेक्ट कंपैरिजन दो चीज़ों का आपस में हम इसको मेटाफर कहते हैं. स्पेसिफिकली द पोम डजंट हैव एनी स्पेसिफिक मेटाफर्स, हाउएवर देयर आर टू एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पोम. द लास्ट line we can say of fourth stanza, both of these lines are same. यहाँ पे extended metaphor use किया गया है, and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. माइल्स रिप्रेजेंट लाइफ जर्नी, बिकॉज यहाँ पे जो माइल जो है वो डायरेक्टली उसको वी कैन से कह सकते हैं कि हमने उसको कंपेयर किया गया अपनी जिंदगी से. वाइल ऑन द अदर हैंड स्लीप रिप्रेजेंट या स्लीप सिंबलाइज डेथ. The second figure of speech is personification. Robert Frost has personified the thinking of horse mildly in the second stanza when it stops. Basically, we have already discussed in daffodils that what personification is. Let me remind you that personification is a figure of speech in which you give an attribute, or we can say give an human attribute to non-human things. Robert Frost has personified the thinking of horse mildly in the second stanza when it stopped. In the third stanza, he has given a sign to the rider. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. It shows as if the horse is a human being who understands his owner's needs or inquires if they have to stop. It means कि ये पर्सोनिफिकेशन इस तरह है कि जो हॉर्स है वो एक तो सोचता है कि क्यों जो है ना वो रुके, और सोचना हॉर्स का काम नहीं है, ह्यूमन बीइंग सोचते हैं. यहाँ पे भी पोएट जो है ना वो पर्सोनिफाई कर रहा है हॉर्स को थिंकिंग के साथ, जो ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट है. देन वो एक अपनी बेल्स को झटकाता है ये पूछने के लिए कि क्या कोई मिस्टेक हुई है. तो ये भी जो है पर्सोनिफिकेशन है. जब इंसान किसी खतरे में जाता है तो वो दूसरे से पूछता है या दूसरे को सिचुएशन से वी कैन से आगाह करता है. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है ना वो राइटर ने यूज किया. द थर्ड इज इमेजरी. Imagery is used to make a reader feel things through their five senses. Mostly हम कहते हैं कि imagery is a figure of speech which is the ability to create mental pictures through words. जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हुए अपने दिमाग में mental pictures create करते हैं कि that is imagery. और ये एक टूल है राइटर्स का जो अपनी राइटिंग में वो यूज करते हैं. द पोइट हैज यूज द इमेजेस फॉर द सेंस ऑफ साइट्स सच एज वुड. वुड्स की बात आए तो हमें एकदम फॉरेस्ट याद आ जाता है, हमारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बन जाती है. हाउस की बात, हाउस करें, लेक, एंड वी कैन से हॉर्स की हार्नेस, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करती हैं. तो दीज इमेजेस हेल्प रीडर्स सी द वुड्स एज अ सोर्स ऑफ solace and comfort to a lonely traveler. And the last figure of speech is alliteration. Alliteration basically होता क्या है? Alliteration is the repetition of same consonant sounds. vowel sounds नहीं students, बल्कि consonant sounds in the same line such as whose, woods. First two WH and W and W
both sound same हैं, जब भी दो sounds same, दो consonant sound same line में use होते हैं तो तब हम उसको alliteration कहते हैं. These phrases are the example of alliteration from the poem Watch his woods, sounds the sweep, his house. Watch his woods में watch and woods, both of these words starts with the same consonant sound. Sounds the sweep, both of these words sound and sweep started with the sound S, which is consonant sound. And his house here, his house is also we can say the both of these words his and house, they these are starting with the consonant sound H. I hope you understand the concept of figure of speeches in this poem. Let's move to the last topic, which can be the grammatical topic of this chapter.